Yes, Dheeraj, you have an interview in NPCIL, and right now you want snap for environmental engineering. Yes, sir. So, Dheeraj, first of all, Sir, tell me the different types of settling in the sedimentation tank. sir, Different types of settling in the sedimentation tank, which is observed. sir, mainly there are four types of type 1 settling, type 2, type 3, type 4 settling. In type 1, uh, there will be discrete particle settlement in dilute suspension, that is raw water. In type 2 settling, there will be flocculated particles settling in dilute suspension, which means raw water. In type 3 settling, particles settle through hindrance settling in primary sedimentation tank in wastewater. In type 4 settling, there will be zone layer-wise settling in secondary sedimentation tank after ASPR trickling filter. What is These the are difference between the zone-wise settling and hindrance settling? zone-wise settling. Yes, sir. In zone-wise settling, the settlement happens in layer-wise, sir, layer by layer. Sorry, sir, I didn't study much deeper about it. Just have, What have you studied? What have you read? sir, I studied like in wastewater treatment, raw water treatment, noise pollution, air pollution. Yes, sir. So this is the topic from the wastewater treatment, different types of settling. Yes, sir. Sir, hindrance settling usually happens in primary sedimentation tank. This I want to know the difference between this. Both are the same. Dheeraj, both are the same. Hindrance settling and zone settling, both are the same. Type 1 settling, we have a discrete settling. Type 2, we have a flocculent settling. Type 3, zone or hindrance settling. Type 4 is the compression settling. What is the design parameter for designing of the secondary sedimentation tank? Design discharge. What is the design discharge or what is the design parameter for secondary sedimentation tank in wastewater treatment plant? sediment. Sir, we have solids flux rate. Should I stay here or? Yes, Sir, Dheeraj, continue, sir, bro. yes, sir. Shall I continue, sir? Yeah, yeah. Sir, in secondary sedimentation tank design, we have solids flux rate uh, as an input parameter in order to determine the generally for any sedimentation tank we need detention time and settling velocity. Sir, those are the main important parameters. Any type of sedimentation tank. ओके, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे डिजाइन पैरामीटर बताइएगा, तो आप क्या बोलेंगे? द डिजाइन पैरामीटर फॉर द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक्स आर द फर्स्ट वन इज द ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट, एंड द सेकंड वन इज द सॉलिड लोडिंग रेट. These two design parameters are taken while designing the secondary sedimentation. आपको थोड़ा वेस्ट वाटर में थोड़ा सा पार्ट आपका वीक लग रहा है मुझे. रो वाटर की बात करते हैं. What is the basic difference? I want to know the technical difference between the slow sand filter and the rapid sand filter. Tell me the technical difference that differentiates slow sand filter and rapid sand filter. So technical difference is in terms of design of filter, the uniformity coefficient means we observe wide range of particles in slow sand filter, sir. Whereas in rapid sand filter, it is very much close to uniform. Uh, that is very narrow range of particles will be observed, and uh, apart from that, the rate of filtration, sir. In slow sand filters, it is very low, sir. The rate of filtration is very low. Whereas in rapid sand filters, it is very high, and we can filter large amounts of water in less time. These are the main differences, predominant differences.
Okay, what about the cleaning? The cleaning, generally these slow sand filters are cleaned when the terminal head loss reaches the 90% of depth of filter. We can clean it by scraping, sir. Whereas in In both the filter cleaning is same. no, sir. In rapid sand filter, we clean it by backwashing. Slow sand filters, we clean it by scraping. In rapid sand filter, there is no surface cleaning. Generally, clean we we clean it by backwashing, sir. We do also surface cleaning in rapid sand filter. Also, we do the back washing, but we also do the surface cleaning. Okay, sir. How will you remove these dissolved parameters, dissolved impurities from the water? What are the different methods we have? Design methods. अच्छा, यहाँ पे कोई और का जब इंटरव्यू चल रहा है क्या? Yes, Dheeraj, बताइए. Sir, dissolved impurities in water can be removed by filtration, sir. And the mechanism of removal is like filtration mechanism, sir. Like first sieving happens, and then sedimentation, and then impaction, interception, and then finally a layer of microbes will be formed over the surface. Biological metabolism. Any other method? Method to remove dissolved impurities. No idea, sir. Sorry. Okay. You can use the aeration. By aeration, dissolved impurities is removed. You are using filtration. From the filtration, dissolved impurities removed. You can use the activated carbon, by which dissolved impurities also removed from the using the activated carbons. If we talk about the dissolved salts, like hardness, we can do the softening of the water. So there's a lot of option you have by which you can remove the dissolved impurities. Like major points are aeration, activated carbon, and filtration. Aeration, activated carbon, filtration. Yeah. Okay. Have you heard about the aeration process? Do you know what is it? Yes, sir. In this process, we try to enrich the water with oxygen and remove undesirable gases from the water, like carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. Just only to remove undesirable gases, we do the aeration. Yep. Also to enrich water with oxygen. To remove the dissolved impurities process. It can be dissolved solids, dissolved gases. We can opt for the aeration. We can do this. Let me give you feedback. अभी आप थोड़ा पढ़कर आओ. अभी आपका एनवायरनमेंट जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जो आपने स्ट्रक्चर में दिखाया था वो कॉन्फिडेंस मुझे एनवायरनमेंट. अभी आपको थोड़ा सा पढ़ने की रिक्वायरमेंट अभी थोड़ा पढ़िएगा. Yes. सर उसके बाद ये दोबारा आना स्नैप के लिए. सर मेरा एक डाउट है, सर. बोलो. सर अभी आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि वो बैक वॉशिंग, स्क्रैपिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड हम कैसे क्लीन करते हैं, वो मतलब वो सब पढ़ना है सर, प्रैक्टिकल रिलेटेड पूरा. प्रैक्टिकल से रिलेटेड लाइक क्या मतलब क्या क्वेश्चन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप. मतलब वो कैसे क्लीन करते हैं. मतलब क्या है.
कैसे क्लीन करते हैं, तो मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि रैपिड सैंड फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं, आपने ऐसे दिया सर बैक वॉशिंग से क्लीन करते हैं, मुझे समझ आ गया। अब आप उसके पीछे का प्रैक्टिकलिटी और क्या जानना चाह रहे हैं कि बैक वॉशिंग कैसे करते हैं, क्या ये माइंड में क्वेश्चन? हाँ वही सर, बताओ। अगर वो कुछ। हाँ। अगर बैक वॉशिंग कैसे करते हैं तो ये माइंड में क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कि सर हम एक स्टोरेज टैंक बनाते हैं, वहां से पानी को एनर्जी मिलती है और वही पानी को हम सप्लाई करते हैं। फिर स्टोरेज टैंक में पानी कहाँ से आता है, वही फिल्टर वाला पानी सप्लाई करते हैं, 5% वाटर लेकर चलते हैं। ये सब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो सारी चीजें। अगर आपसे पूछता है कि या क्या आपने प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं, मैं प्रैक्टिकल तो नहीं देखा सर, बट मैंने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है। जो एसके गर्ग की बुक, जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा गया है, आप स्टैंडर्ड बुक का नाम देख सकते हैं एसके गर्ग। या सर जो मैंने अपने नोट्स से पढ़ा है, जहाँ भी मैंने पढ़ा है सर अपने बीटेक कोर्स में, तो थ्योरेटिकल चीजें मुझे पता, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा सर, कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऐसा पूछ। हाँ। सर एक और सर, लास्ट, वन लास्ट। सर आपने बोला था हिंड्रेंस क्या सेटलिंग है? और नल सेटलिंग में डिफरेंस, फर्क क्या होता है? तो आपने बताया दोनों सेम ही होता है, हम्म। पर मतलब मैंने पढ़ा हम्म। हिंड्रेंस सेटलिंग टाइप 3 सेटलिंग होता है, टाइप 4 सेटलिंग को हम कंप्रेशन, लेयर्ड और जोनल, तो तीनों नाम। नहीं, जोन तीनों। फोर सेटलिंग अलग होती है, मतलब कंप्रेशन सेटलिंग जो होती है वो जोन फोर सेटलिंग होती है। हिंडर सेटलिंग और आपकी जोन सेटलिंग एक ही होती है। हिंडर सेटलिंग का मतलब क्या है कि व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू सेटल इन द वाटर, if there is a lot of concentration of the particles in the water, so one particle is going to settle in the water, another particle is also settling in the water. So when the particle is going to settle, some turbulence is created, some turbulence is there around this particle, and some turbulence is also there another around the another particle. So this, due to this turbulence, or you can say this area of turbulence become overlap each other, and due to this overlapping, one particle settling affects the settling of another particle. So that means hindrance is there. So that's why we are saying that it is the hindered settling. Like, and when it happens, all in one layer, all the particles settles with their resultant velocity, because their settling velocity, due to the overlapping, or due to the hindrance, all the particles settle with their resultant velocity. So zone wise, zone particles are going to settle. So both are the same, hinter and settling और zone settling. Once आप एक बार go through करो अपने notes को, आप अगर फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, देन आई विल क्लियर योर डाउट। ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके धीरज, आप जा सकते हैं, और आप मेरे को मैसेज करना दोबारा से, मैं आपको स्लोड देता हूँ बाद में। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।